Bismillahirrahmanirrahim. Look at the whiteboard. Look at me. Don't look here and there. Do yourself cleaned. Get yourself vaccinated. ये मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, बल्कि ये कुछ examples हैं imperative clause की. So today we would like to talk about the imperative clause. ये जो imperative clause है, the imperative clause, some of the people say that it is called the imperative sentence. Some of the grammarians say that it's clause. Why do we call it as a clause? Because it has the subject and the predicate, and it is fulfilling the grammatical elements of the sentence or the clause as well. The subject plus the predicate is equal to clause. Imperative clause से क्या मुराद है? Basically ये जो imperation है या जो imperative sentence है, imperative sentences या imperative clauses हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दूसरों से काम करवाते हैं. When we want people to do something for us, that's called the imperative clause or imperative sentence. आप किसी को कमांड दे रहे हैं या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या किसी से काम करवाना चाह रहे हैं. So we are using the imperative sentence. और एक चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि imperative sentences के आखिर में हम लोग full stop लगाते हैं. So I would like to write down some of the characteristics of the imperative clause. And I will try to justify my point of view as why do I call it as a clause? Why don't I call it as a sentence? जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि clause और sentence के दरमियान कोई भी फर्क नहीं है. Clause कभी कभार मीनिंग देता है, कभी कभार मीनिंग नहीं देता. जब clause मीनिंग देता है, that's called the independent clause or the main clause or the principal clause. जब मीनिंग नहीं देता तो उसको कहते हैं the dependent clause or the subordinate clause. ठीक है, तो हम बेसिकली ये जो imperative clause का नाम यहाँ पे बोर्ड पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, that is one of the kinds of independent clauses or the principal clauses or the main clauses. ठीक है, because they give meaning themselves, they are not conditioned upon other sentences. दूसरे sentences पे dependent नहीं है, दूसरे sentences के मोहताज नहीं है. ठीक है, and for example I say that imperative sentences is used when we want others to do something for us. जब हम किसी और से कोई काम करवा रहे हैं हमारे लिए, we use the imperative clause or the imperative sentences. For example, when I say to you, I have you write something, for example. ठीक है, I have you write something for me. Now this is called the imperative sentence or directly if I say, वो तो indirectly मैंने आपसे कह दिया, एक छोटी सी example दे दी. We will talk about the direct and indirect speech in detail in the coming videos. So if I say, जिस तरह कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में 2-3 sentences बोले थे. So for example I said, look at the whiteboard. So I want you to look at the whiteboard. This characteristic or this point says that when we want others to do something for us, for example, write an application for me. अगर मैं आपसे request कर रहा हूँ कि आपसे कह रहा हूँ कि write something for me, for example, it says that मैं आपसे कोई काम करवा रहा हूँ, मैं आपसे कोई application लिखवा रहा हूँ मेरे लिए. That's called the imperative clause or imperative sentence, for example. And the very important thing to keep in your mind is to keep in mind the pattern. For example, ये जो pattern है imperative clause की, इसका pattern क्या है? इसका pattern ये है कि for example सबसे पहले ये जो declarative sentence था या declarative clause था या जो exclamative sentence था, उसके आखिर में हम लोग exclamative sentence के आखिर में हम लोग exclamative mark लगाते थे और declarative sentence के आखिर में हम लोग full stop लगाते थे. इसके आखिर में भी full stop लगाया जाता है. Because if you do not do that, you are committing a grammatical mistake. So you should not repeat that. You should not commit that mistake. ठीक है, और पैटर्न की जब हम लोग बात करते हैं, डिक्लैरेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते थे
फिर उसके बाद verb लगाते थे, फिर extension the predicate लगाते थे। और exclamative sentence में हम लोग सबसे पहले interjection लगाते थे, फिर उसके बाद subject लगाते थे, फिर the rest of the sentence. As far as the imperative clause or imperative sentence is concerned, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? The verb. First of all, we use the base form, or the base form. For example, यहाँ पे मैं लिखूंगा the base form. Verb plus object or the complement, for example, and the rest of the sentence as well, which is called the extension of the predicate. As far as the base form is concerned, what exactly that is? Base form means the first form of the verb. Now, for example, go, write, sit, teach, and etc., etc. The base form is a verb. The base form is a form whose meaning is given by the dictionary. Now, if I say, for example, go plus going, went, gone, वगैरह वगैरह, ये जो base form है, this is called the first form of the verb, go, or write, or dance, for example. These all are called the base forms. The second form of the verb, the third form of the verb, and the ing form of the verb, or the two infinitive form of the verb, or the third form of the verb, are not given by dictionary. For example, if I want to check out the meaning of the verb going, for example, the dictionary is unable to give me the definition of going. Rather, I have to check out the meaning of go. So, as far as the imperative clause is concerned, we use the base form, first of all, at the very beginning of the sentence, and then the rest of the sentence. Now, for example, a question might be, why don't we use the subject plus verb plus object and plus the rest of the sentence? ये हम क्यों? क्योंकि क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास में subject plus predicate, लेकिन यहाँ पे अब predicate का जो सबसे बड़ा element है वो verb है, ठीक है? सब्जेक्ट को हम लोगों ने छोड़ दिया है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया है. I would like to write down a sentence, for example, go to my office. I want another body to do something for me. That's why, because if you focus on the first point, we use the imperative clause when we want others to do something for us. Okay, now, pattern is the base form plus object and plus the rest of the sentence. For example, go to my office. यहाँ पे जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको कमांड कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई काम करवा रहा हूँ, तो आप जो है ना सब्जेक्ट है, मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, ये एक किस्म का अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, ठीक है? सब्जेक्ट यहाँ पे पोशीदा है, सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि मैं किससे मुखातिब हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ. So you have to do something. ठीक है? So that would be grammatically awkward if I tell you, for example, Khalid, go to my office. Although that's right, but that is grammatically awkward. So the imperative clause says that when you want other people to do something for you, so you have to use the first form of the verb at the very beginning of the sentence, plus object and plus the rest of the sentence, for example. Okay? So that's called the imperative clause. An imperative clause, the direct imperative clause is often used in speaking rather than writing. अगर आप किसी को बता रहे हैं, किसी से काम करवा रहे हैं, that's called imperative, and that's called the imperative clause, and that's called the imperative sentence as well. Now, कभी कभार ये जो imperative clause है, that can sometimes be impolite. For example, that can be impolite, and sometimes that can be polite. The polite trigger, for example, please. यहाँ पे अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप please को ऐड कर सकते हैं. राइटिंग में अगर आप please को जुमले के शुरू में ले आते हैं तो आपने please के बाद comma लेना है. So you have to give a comma. Now, impolite, directly the first form with verb plus object. For example, write something, eat something. That's called impolite. That's impolite suggestion. For example, अगर मैं overweight हूँ, मैं आपसे suggestion ले रहा हूँ, advice ले रहा हूँ, so you have to advise me. आपने मुझे बताना है कि, for example, if I tell you, for example, XYZ,
I'm overweight, I cannot walk, मैं चल नहीं सकता, I'm overweight, I'm subject to hypertension, तो आप मुझे कहेंगे कि walk, go, run, etc. etc. We are having billions of words, ठीक है? That's called impolite. अगर हम एक दूसरे के साथ दोस्त हैं, if you are friend of one another, for example, so that can be impolite. अगर आप टीचर से या अपने उम्र से बड़े आदमी से अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, please. So for example, if you have gone to a doctor, तो आप डॉक्टर से कहेंगे कि प्लीज आप ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करें. डॉक्टर साहब प्लीज do not, that's called negative imperative. Doctor, please do not prescribe many medicines for me. Okay? So that's called please. If you are requesting a teacher, so आप ये कह सकते हैं कि please लगा के, तो आप कह सकते हैं कि sir, please take a side because I cannot see the whiteboard clearly. That's called the polite request. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो imperative sentences हैं या जो imperative clause है, for example, that they are used for command, आप command के लिए और request के लिए. Request, suggestions, for example, अगर आप किसी को suggest कर रहे हैं, command, request, suggestion, etc. For example, we are using the imperative clause or the imperative sentences, for example. So यहाँ पे when we want others to do something for us, and the pattern is the first form of the verb plus object and plus the rest of the sentence, or the imperative sentences can be impolite and that can be polite as well. Now we use the imperative clause for command, for request, for suggestion. Command, अगर आप कोई आर्मी ऑफिसर है, वो सबऑर्डिनेट को कमांड कर रहे हैं, that can be sit or stage, for example. Request, यहाँ पे polite request आ रहे हैं, या आप किसी को suggest कर रहे हैं, जिस तरह कि मैंने आपको पहली वाली example दे दी. So you can, these are some of the usages of the imperative clause. These are some of the usages of imperative clause. So imperative clause is also divided into 2 to 3 categories. Now, for example, imperative clause itself is divided into 2 or 3 more kinds. For example, the first one is called the negative imperative. Number 1. This is the first one. When negative imperative is also used, ये जो इसकी जो इस्तेमाल है, इसका जो यूसेज है, वो बिल्कुल सेम है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे गौर करें. लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी से कोई काम नहीं करवा रहे हैं, अगर आप नेगेटिव में किसी बंदे को सजेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी बंदे को एडवाइस नेगेटिव में कर रहे हैं, so you have to use not, do not play, for example, at evening, for example. Do not play at evening. तो यहाँ पे जो है ना, for example, the first one is called negative word, या जो negation को show कर रहा है, निंकार को show कर रहा है, and the rest of the sentence, the rest of the sentence का जो pattern है, वो बिल्कुल same है. First form of the verb and the rest of the sentence, for example. This is called the rest of the verb and the rest of the sentence. यहाँ पे जो subject है वो है यहाँ पे पोशीदा है, वो understood है balfaz dīgar. So we say that's called the negative imperative. एक advanced point है, उसको कहते हैं indirect command. So ये जो indirect command है, we will talk about the indirect command, indirect suggestions, etc. when we reach the direct and indirect speech in the coming videos. Now this is the first kind of imperative clause or the imperative sentence. The next kind of imperative clause and imperative sentence is called the emphatic imperative. ये क्या है? Emphatic imperative or the emphatic sentence, for example.
अगर आप किसी सेंटेंस पे अगर आप किसी सेंटेंस पे जोर दे रहे हैं, किसी सेंटेंस को, किसी कमांड को, किसी सजेशन को, किसी डायरेक्शन को अगर आप स्ट्रेस कर रहे हैं, या ये जो इम्फेटिक सेंटेंस है या इम्फेटिक इम्पेरेटिव है, ये इम्फेटिक इम्पेरेटिव क्लास is used when you try to emphasize your statement, your command or request or your suggestion, your direction or imperation. For example, when you want to stress upon your command or your suggestion, for example. I say ये जो emphasis है, it's basically grammatical term. जब आप किसी से कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, if I tell somebody, write an application for me, hurry up, for example. मैं एक टीचर हूँ, एक कमांडिंग या एक डोमिनेंट पोजीशन पे यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने स्टूडेंट से कह रहा हूँ, write an application for me, write a letter for me, for example, bring a glass of water for me. So ये एक किस्म का एक जुमला है, एक किस्म का इंप्रेशन है, इसका एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, एक खास, एक मखसूस पैमाना है इस सेंटेंस का. अगर मैं अपने स्टूडेंट से ये कहूँ, do write a letter for me, do write an application for me, do bring a glass of water for me, it means, अगर मैं अपने स्टूडेंट से ये कहूँ कि do bring a glass of water for me, it means कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर सकता. इसीलिए the student is bound to go outside of the room to fetch a glass of water for me, because it's very much necessary, it's very much important. Okay, now if I say, if I'm overweight, I take a suggestion from my friend. मैं इनसे कह रहा हूँ कि यार मैं बहुत ओवरवेट हूँ और मुझे सजेस्ट करें. वो मुझे कह रहे हैं कि यार, because he or she has been telling me for a long time, I'm not following her or him, मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल. तो एक बार फिर मैं उससे सजेशन ले रहा हूँ, एडवाइस ले रहा हूँ. So he or she will tell me, do go for exercise, do go for running, for example, or do join a gym, for example. So ये जो जितनी सेंटेंसेस हैं, आप खामखा करें. ये जो खामखा का लफ्ज़ है, ये डू में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, do bring a glass of, ये जो सेंटेंस आप लोगों को नजर आ रहा है, do bring a glass of water for me, यहाँ पे आखिर में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है. Now, do bring a glass of water. This is called the emphatic imperative, because I am emphasizing somebody to bring a glass of water for me, otherwise I will die. That's called the emphatic imperative. Now, this is called the imperative clause because this is fulfilling the grammatical elements of a clause. Subject भी है जो कि बिल्कुल understood है. यहाँ पे verb भी है, यहाँ पे the rest of the predicate भी है, और extension of the predicate भी मौजूद है. और ये एक किस्म का यहाँ पे मैं emphasis कर रहा हूँ, I'm emphasizing, और इसीलिए इसको कहते हैं emphatic imperative clause. And the last one is, the last kind of imperative clause is called the passive imperative. The passive imperative, यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना जरूरी है. It's called, passive imperative को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. Now, for example, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? get लगाते हैं. Now, for example, if you tell me कि because it is the time of it is the era of COVID-19, you are suggesting me, आप मुझे suggest कर रहे हैं, sir, get vaccinated. For example, I get plus the third form of the verb. यहाँ पे get plus past participle or
the third formative verb. और यहाँ पे आप मुझे ये कहेंगे get vaccinated for example, get your work done. ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो काम है वो किसी और से करें या किसी और से करवाएं. For example, ठीक है, get a glass of water brought. That's called the passive imperative. When we talk about the active and the passive voices, in the coming videos, we will touch upon once again on this structure. Get plus third formative verb. And that's called the passive imperative. Get dressed, for example. Get dressed. Get the child dressed. You know, if you are commanding your subordinate, for example, or subordinate, आप किसी बंदे से कह रहे हैं यार my car should be cleaned, so you can say get my car washed, for example, आखिर में full stop. So once again, this is called imperative clause. ये basic usages है. जब हम लोग किसी बंदे से काम करवाते हैं, we use the imperative clause. जब पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम first form of the verb को लगाते हैं, फिर the rest of the sentence. ठीक है, write something. That's called imperative. ठीक है, हम you know the impolite or polite भी हो सकते हैं. ठीक है, अक्सर आपका imperative clauses जो है ना वो impolite है, लेकिन कभी कभार वो polite भी हो सकते हैं. जब आप इसको polite तरीके से इस्तेमाल करते हैं, so you have to use please, kindly, with due respect, with all due respect. ठीक है, इस तरह के words and phrases आप इस्तेमाल करके आप polite तरीके से भी command कर सकते हैं, request कर सकते हैं, suggest कर सकते हैं, आप किसी बंदे को direct कर सकते हैं या फिर आप suggest भी कर सकते हैं. ठीक है, so these are some of the usages. और ये kinds है negative imperative. Do not play at evening. आप किसी को negative में किसी बंदे को suggest कर रहे हैं. And this is called emphatic imperative, when you are emphasizing on your suggestion, on your command, or on your direction. So you are using the emphatic imperative, and it can also be a passive imperative as well, when you want somebody else to do something. Okay? So that's called these are called the kinds of imperative clause, and these are some of the usages of imperative clauses.